अपॉइंटमेंट्स करके उनको वहाँ भेजा गया है। हम उसको तुरंत चेंज कर रहे हैं ताकि उनको एक परमानेंट, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, परमानेंट लोग वहाँ नहीं जाएंगे, तब तक उनका जो पढ़ाने में जिस प्रकार का एक लेवल चाहिए वो है नहीं है। एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को जो टीचर बन करके आगे आना चाहिए वो उसमें नहीं है। तीसरा, हमारे यहाँ जो बीएड कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेजेस नंबर ऑफ यानी एक प्रकार का जंगल सा बना हुआ है। देयर आर 450 बीएड कॉलेजेस इन हरियाणा, और देखते हैं उनका लेवल पढ़ाई का इतना कम है। हमने उनको भी जहाँ जहाँ अच्छा लेवल नहीं है पढ़ाई का, उनको बंद करने का निर्णय लिया है कि अच्छे लेवल के टीचर्स ये वहाँ आएँ, वहाँ खड़े हों। दूसरा, टीचर्स को बहुत ज़्यादा अपने जो वर्किंग प्लेस उनका उनके घर के पास हो। ये जो होड़ लगी होती है ट्रांसफ़र की होड़, उस ट्रांसफ़र में कुछ लोगों को तो न्याय मिल जाता है और कुछ लोग बहुत पिछड़ जाते हैं, उनका पढ़ाने में मन ही नहीं करता। तो हमने एक नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है। उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से एवरी टीचर, उसका एक सिस्टम बनेगा, उसके एक सीनियरिटी मार्क्स होंगे। उस सीनियरिटी मार्क्स के हिसाब से उसका ट्रांसफ़र जो है वो फिजिबिलिटी कहाँ उसकी ऑप्शन है उसके हिसाब से उसको करेंगे। और मोरओवर जहाँ जहाँ टीचर्स के रहने की व्यवस्था नहीं है वहाँ टीचर्स के रहने के लिए हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको मकान बनाने के लिए उनको फ्लैट्स दे रहे हैं, ताकि हर ब्लॉक लेवल के ऊपर एक 50-60 फ्लैट्स हो, ताकि आसपास के टीचर्स वहाँ रह सके, नज़दीक आकर के। कोई गांव में रहना चाहे, गाँव पुराने समय मैंने देखा स्कूलों के साथ 5-5, 7-7, 10-10 फ्लैट्स होते थे कि उनमें जाके रहते थे। आज वो सारे फ्लैट्स कहीं है नहीं है, केवल बिल्डिंग बना दी और उस बिल्डिंग में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, पढ़ाई का कोई सिस्टम लेवल है नहीं। इसलिए रिमोट एरियाज़ में भी पढ़ाने के लिए वो जाए, उसके लिए स्पेशल हार्ड एरिया अलाउंस ये हम दे रहे हैं। जैसा हमने देखा सारे हरियाणा में टीचर जाने के लिए तैयार है, मेवात में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमको मेवात का अलग से कैडर बनाना पड़ा, ताकि मेवात का कैडर मेवात में ही रहे। लेकिन कब तक उसको रखेंगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, अल्टीमेटली उसको भी अपने घर के नज़दीक जा कर के पढ़ाने की इच्छा करती है। तो इसलिए मेवात के बच्चे उन्हीं को ट्रेंड करके, जो ग्रेजुएट्स हैं वो पढ़ाने के लिए टीचर्स वहीं के टीचर्स वहाँ खड़े हों, ये एक उसके लिए हमने प्रायोरिटी तय की है। और दूर से अगर भेजेंगे तो उनको अलग से इंसेंटिव देंगे कि हार्ड एरिया अलाउंस इस नाते टीचर्स को वहाँ दिया जाए, ताकि सब चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत काम ऐसे नए शुरू किए हैं। और भी जब आप जैसे लोगों के बीच में बैठेंगे, नए सजेशन जो आएंगे उनको हम लागू करेंगे। Shailja, the next question is to you, because I think since we're talking about the K to 12 school segment, child development is very important. Maybe you can share some thoughts on what India as a country should be looking at, because I think all of us look at education from different perspectives, but I think it's very important to understand the child development perspective. If you can share that, and maybe something that the state can be doing or are doing, that would be helpful. Thank you, Harjeev. I think very important question for each one of us to think is, what does education mean to us? If education means the child goes to school, picks up reading, writing, math, English, Hindi, goes to middle school, picks up science, goes to chemistry, physics, gets high marks, gets into good college. If that is education, then I think we have got the wrong end of the stick. I think one thing all of us would agree on, that we need to question that. Because that is something that, what Sandy was talking about, that this whole industrial model of the conveyor belt, where we put children on conveyor belt from nursery till class 12. And we need to move away from that, and we need to think, is there another model? Rather than the conveyor belt model, can we think of opening more doors for them? And I think opening windows for them. And I think that can only happen if we are able to create emotionally safe spaces in the classroom, in the schools, where children can think, where children are encouraged to think. Because what I'm sure everybody on the panel will agree is, we need individuals who can think, who are curious. And for that, like very clearly the Honorable Chief Minister said, that having number of schools doesn't make a difference. Kind of a state talks about, we've opened so many schools. That doesn't really. A quality of a school depends on the quality of the teachers. And the teachers need to create that. Teachers need to see each and every child who comes into my classroom.
how can I bring out the best in the child? How can I create a thinking space in the classroom? Because every child is wired to think. Every child wants to. And I think, I was just thinking of, we talk about technology in the, this work done by Sugandha Mitra, in Sugata Mitra, that's right, the hole in the wall. He has made it very, very clear that every child is curious, every child wants to learn. And if we are able to go with that, we tell children, do this, do that, this, study for so many hours, take physics. You will not amount much to life if you drop maths. That kind of thinking needs to change. And I hope we are changing that. Thank you. Thanks, Shelja. I'm going to come to Chinmay. So Chinmay is with KPIT and he heads alternative and hybrid solutions. And हम जब बात करते हैं climate change की and आप बना रहे हो technology जो futuristic है, but how can you tie that back to the skills you're going to look for in a technology company? Because your company recently done the bus in Parliament, which is an electronic bus, which is indigenously developed. Maybe if you can talk about what are the skill sets required to get us to that standpoint, because you already have people who do that. So when we look at innovation to be done here for the market, which is India, we have to realize that the training which is given needs to be oriented for this market. And I think one of the most important things we are realizing as we scale up in the journey of innovation is science as a topic is not necessarily taught in a way where students are encouraged to think about it. And at our level, whatever small impact we can have, we have actually done this as a part of our CSR called Chote Scientist. Sir, जहाँ पे हम लोग छोटे किट्स टूल्स बनाते हैं जिसके बेसिस पे कोई एक साइंटिफिक प्रिंसिपल सिखाया जा सके. फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी के लिए रबर बैंड्स लेके कुछ ऐसा टूल बनाए जो बच्चे खेल पाए और जिसके बेसिस पे वो सीख पाए कि वो अंडरलाइंग फिलॉसफी प्रिंसिपल्स क्या है. और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने सीखा है कि वो टॉय जो हो या खिलौना जो हो वो इतना साधारण हो कि वो टीचर्स कलमारी में मत रखे. क्योंकि हमने पहले जब हम कंप्यूटर्स देते थे वो बहुत अच्छा इक्विपमेंट था, वो सब अंदर चला जाता था, वो बच्चों को दिया नहीं जाता था कि बच्चे तोड़ देंगे तो क्या करेंगे, तो ये तोड़ने के लिए दिए थे हम लोग. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी एनकरेज यंग माइंड्स टू थिंक एंड give them space to think, because if you give them a toy they can do whatever they want with it, but if you just give them a lecture and show them a presentation and ask them to learn things, it doesn't stay in, and then over time it's the rote model which goes in and it doesn't help when we start talking about innovation. Sir, innovation के ऊपर कि हरियाणा भी एक innovation hub के कोशिश कर रहा है, काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज यहाँ आई. हरियाणा में क्या चीज़ें आप इनेबल कर रहे हैं जो अट्रैक्ट करेंगी कि ये इनोवेशन हब बने? एक तो टीचर्स का जो बहुत ज़रूरी है जिसके बिना हम कर नहीं सकते, और क्या जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इनोवेशन हब बनाने के लिए आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी हमने जस्ट लास्ट मंथ मार्च में एक इन्वेस्टर समिट प्रोग्राम किया था, लेकिन उससे 6 महीने पहले एक इनोवेशन के नए प्रोग्राम कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके उसमें शुरू किए थे. वो मेनली शिक्षा के लिए कितने थे कितने नहीं आई डोंट नो, लेकिन बाकी सब उद्योग जगत में या किसी भी एक नौजवान को, युवक को अपना जॉब क्रिएशन में किस किस प्रकार से सहयोगी हो सकते हैं, उतने प्रोग्राम तो सारे सामने आए हैं. लेकिन उन्होंने कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ इनोवेशन ज़्यादा किया होगा, आई डोंट थिंक सो. लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे ज़रूर लगे हुए हैं जिनको हमने पूरी छूट दी है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको नया इनोवेशन आइडिया कोई ना कोई आता है तो उसके लिए हमने पूरी छूट दी है. और यदि ऐसे कुछ अच्छे आइडियाज़ आते हैं और उसको हम चर्चा के माध्यम से उसको क्लियर करते हैं तो दोज कैन बी इम्प्लीमेंटेड. थैंक यू सर. Stephen, I'll come to you because you're at a disadvantage because half this conversation is happening in Hindi. But we were talking about innovation hubs and how do we create innovation hubs in India, particularly related with the
whole issue around education and how we impart education. And you've been involved with this topic for a very long time, particularly with the government in the US. Could you share some of your experiences? What are some of the learnings from your experience in India that we could be doing better? Thank you. And first, I'd like to say, Chief Minister has been such a supporter of ours and of education. And true innovation only occurs when you have leadership at the top that supports innovation. So thank you for your support and your forward and progressive thinking. You know, we've heard many things on the panel today. Children by nature are innovative. Children by nature are creative. Children are by nature problem solvers. But what happens is we stifle that because we create a model, as was noted earlier, an industrial model where one size fits all. Anyone who has more than one child knows that your 2 children, 3, 4, I have 5, children don't all learn the same way. They all learn in different ways. So often when learning doesn't occur for a child and we don't think that they're being creative and innovative and they're not trying new things, we look to blame the child. The reality is the adults are the problem. It requires a mind shift in the adult thinking. If we can change our mindset as adults and we can give children the freedom to think, explore, fail, try, fail again, try again, we will have great opportunities, regardless if it's in India, America, or anywhere else. When I first started coming to India, I visited many schools. I have met with many, many people. People have constantly told me, you can't find teachers with that kind of mindset in India. Over and over I was told that. So I said to myself, in a country of 1.3 billion people, I can't find any teachers that have that skill set? Well, fortunately at Vega we have. We have many of those teachers here today. And we need to have people like that who have that progressive thinking, that mindset, that kind of innovative approach to allow our children to have the flexibility to explore, to test, to fail, and to try again. And if we do that, we will change the whole paradigm of education and the future of India and the future, frankly, of the world. Thanks, Stephen. Shashank, you've been very silent, so I'm going to come to you and then Sandeep. In terms of sort of what are the things, you look at it more at a macro level, right? So what are some of the things we should be thinking about that we're not thinking about today, whether it's a K-12 or in the skilling side or on the college and the higher education side? Thanks, Arjiv. I'm going to limit it to perhaps one suggestion and one comment. Right? The suggestion, if I can make, is based on something that I find sad, astonishing, and I can keep adding adjectives of that kind, that every private school that gets set up, and many get set up in Haryana, chooses to run to CBSE the moment that they get set up. They want the NOC and they want to run. Right? I find it astonishing that they wouldn't choose to go with the Haryana board. There must be something in the Haryana board which scares them. Whether it is the regulation, whether it is the curriculum, whether it is the examination, and they feel that it's inappropriate for them, and they would like to run away. They want to be based in the state, but they want to be running away to the central board the moment they get an opportunity. This is true not just of Haryana, this is true of perhaps every state in this country. Now, while the rules of business for investment and all are being drastically transformed and changed in Haryana to attract the best companies from around the world, the suggestion I would make to you, Honorable Chief Minister, is can we look at transforming the Haryana State Board to be so innovative that private schools by choice want to be with the Haryana board rather than with the central board. It would be transformative. So that is my one suggestion. It might take time, it'll be a huge effort, but it would put Haryana on the map
of true innovation in education policy. The comment I'd like to make is related to teacher training, and I've been following the good work Haryana has been doing in terms of teacher training. The issue I have with teacher training is the curriculum of the B.Ed colleges and the fact that innovative practices don't really come into the curriculum. Some of the B.Ed colleges still talk about epidiascopes. Now, those of you who know an epidiascope will probably only find it in a museum right now. You just can't even locate it. Now, there's no point teaching people about an epidiascope when you can't even locate the device. Right? So I think that is the comment, that while we look at it, teachers being central to any education system, and we are transforming the B.Ed colleges, we should also transform the curriculum of the B.Ed colleges. सीएम साहब, मेरा एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस देश में ला रहे हैं। हरियाणा में भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम अगर ईज़ ऑफ डूइंग एजुकेशन भी ला सकें तो उससे बहुत ही एजुकेशन को फ़ायदा। ईज़ ऑफ डूइंग एजुकेशन का मतलब यह नहीं है कि प्राइवेट स्कूल को जो करना चाहे कर लें, लेकिन किसी वेल मीनिंग एजुकेटर को स्कूल अगर खोलना हो तो बहुत मुश्किल है। तो अगर ईज़ ऑफ, और हरियाणा बोर्ड से भी वो लिंक्ड है कि जो शशांक जी ने बोला कि हम दिल से हमें चाहना चाहिए कि हम हरियाणा बोर्ड से जुड़ जाएं, तो हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकें हम वी विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर, ताकि हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लर्न इन इंडिया भी कर पाएँ कि दुनिया से लोग इंडिया आएँ पढ़ने के लिए, कम से कम एशिया से तो लोग आएँ इंडिया पढ़ने के लिए। सर, आपका कोई इस पे रिस्पॉन्स? काफ़ी अच्छे सुझाव हैं ये। वास्तव में ही हमको हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का लेवल अच्छा बनाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ लोग दौड़ते हैं। उसका एक कारण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन में अच्छा है। दूसरा, कुछ सेंट्रल एम्प्लॉइज़ के जो प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों के पढ़ाने का, इसका उसका, वो भी जगह जगह अब आते जाते हैं। उनके कारण से भी उनके मन में रहता है कि हरियाणा के साथ जुड़ने के बजाय क्यों नहीं किसी सेंट्रल बॉडी से जुड़ें। खैर वो एक छोटा कारण है, लेकिन लेवल ऑफ एजुकेशन इट मस्ट बी अपग्रेडेड, इट मस्ट बी क्वालिटेटेड। तो इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। वैसे बहुत से काम हम कर भी रहे हैं, जैसे मानो हमने अब धीरे धीरे बच्चों को हर स्कूल के साथ प्लेग्राउंड होना ज़रूरी करके, हालांकि इसमें कुछ प्राइवेट स्कूलों को कठिनाई भी आ रही है कि उन प्राइवेट स्कूलों के साथ प्लेग्राउंड जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन child should be should be allowed to, या should be made available at the playground also, ताकि वो खेल खेल में भी बहुत चीज़ें जो सीख सकता है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसके कारण से अच्छा बढ़ेगा। ये हम कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक स्पीड प्रोग्राम अपने यहाँ बनाया है। स्पीड प्रोग्राम में उसका जो बच्चों का जो रुचि है खेलों के अंदर बचपन में यदि है तो उनको वहाँ से पिकअप करते हैं। 5000 बच्चे अप टू द एज ऑफ 5th क्लास, उनको हम चयन करके और उनको आगे फिज़िकल जो हमारे स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं, स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके उनको पढ़ाते हैं। इस प्रकार के कई स्पेशल प्रोग्राम भी हम उसमें कर रहे हैं। स्कूलों का वातावरण अच्छा बने, अभी सभी स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स हों, ये एक अभी अभियान चलाया है।